Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, welcome to the Hope Science School and College Kamaraket. This lecture is for first year. I am Kiran and I am gonna teach you English. So first year, your first unit is first attempt at the challenges. This unit contains three readings, and first reading is his first flight. This is not about the flight of any human being or any pilot. This is about the flight of a bird, a seagull. And the author of this chapter is Limo Flattery. Why he has written this chapter? उसने क्यों ये चैप्टर लिखा, उनका थीम क्या था, तो हम डिस्कस करते हैं. So his first flight highlights the importance of independence, self-belief, confidence, and the need for the motivation to attain goals. If you want to achieve any goal in your life, and if you want to do something else, okay, you should be independent, you should have self-belief, you should be the confident person, and you need the motivation from the outside also. Which type of motivation? Who can motivate you? Your parents can motivate you, your friends can motivate you, your teachers can motivate you, and sometimes your siblings can motivate you. Mostly the siblings demotivate us, but in some cases they also motivate us. Necessity is always the mother of invention, but it sometimes needs an initial spark from the outside, that is motivation. The story is also a metaphorical assertion that everyone needs to be independent even while staying involved in the family life. Even if you are living with your family, even then you need to be independent. But the joy of the independence is not meant for the gods. लेकिन जो इन्जॉय है इंडिपेंडेंट होने की, वो जो बुज़दिल से लोग होते हैं वो कभी भी इस चीज़ को अपनी लाइफ में इन्जॉय नहीं कर सकते. तो क्या होते हैं ये जो थीम्स है, इंडिपेंडेंस, सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन, ये एक सी गर्ल के अंदर क्या था और क्या नहीं था, और मोटिवेशन उसके लिए कौन बना, तो उसकी अपनी फर्स्ट फ्लाइट कैसे ली, ये हम डिस्कस करते हैं इसकी समरी में जाके. Here is the summary of the lesson. Look, the young seagull looked down desperately at the vast expanse of the sea that stretched down beneath his ledge. He was hungry. His parents had flown away along with his brothers and his little sister, leaving him alone on the rock without food. Now, what I was saying when I was just discussing the theme, that even you are living with your family, then you need to be independent. Here, the seagull was living with his family. He was having his parents and the siblings also, but they all flown away. Okay, and he was now hungry and alone on his rock without food. That is independent. You should be the independent. This is the first theme. Look at the next one. They could all fly. He couldn't. That is confidence. He was lacking the confidence. If they could fly, he could also fly, but he was not confident. He had tried several times to run forward to the brink of the ledge and flap his wings, but he became afraid. He was afraid. He doesn't have a confidence. Now he was certain that his wings would not support him. His parents had tried countless times to make him fly, but for the life of him he would not make an attempt. और अगर इस दुनिया में देखा जाए, बच्चे तो सिर्फ ओनली हमारे पास होते हैं, पेरेंट्स होते हैं जो आपको हर सूरत में क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं और चाहते हैं कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए. तो उसके पेरेंट ने, बर्ड था, उसके भी पेरेंट्स क्या चाहते थे कि वो भी अपनी लाइफ इंजॉय करें, वो भी अपनी फ्लाइट्स लेना स्टार्ट करें, बट ही वॉज अफ्रेड. तो वो क्या था, उसे अपने सेल्फ बिलीव नहीं था. Look, he felt that he was going to starve to death on his ledge. Even his mother was not looking at him. In the whole world, only the mother is the person that never leaves her children alone. But his mother was not looking at him. You can just imagine his situation. She was tearing a piece of fish with her beak. The sight of the food maddened him. He cried at her, but she just screamed back mockingly. What do you think? Why she has done this? उसने ऐसा क्यों किया होगा? अपने ही मतलब बच्चे के सामने उसने खुद फूड खाना शुरू कर दिया और उसे नहीं दिया. Look at the next one. It will be clear from there. Suddenly he felt the joy seeing his mother approaching him with food, but she halted, keeping the fish just out of his reach. Maddened by hunger, he dived at the fish, but his mother flew upward and he started falling.
जब उसकी मदर इतनी करीब गई उसके, और लेकिन करीब गई लेकिन बिल्कुल उसके पास फूड नहीं पहुंचाया, तो वो पागल हो चुका था भूख से। उसने क्या किया, फिश के ऊपर एक झपटा जिसने कहते वो मार दिया। तो उसे a monstrous terror seized him, but the next moment he realized that he was flying. जब उसने फूड के ऊपर अटैक किया तो उसने क्या किया, एक अपनी पहली उड़ान भरी, क्योंकि वो तो उसके रॉक पे तो फूड नहीं था, वो तो बीच में लेके उड़ रही थी उसकी जो भी मदर थी। तो he was born to fly and he had made his first flight. That is the achievement. To achieve any goal, you should be the confident, you should have self-belief, you should be the independent one, and you need motivation from the outside. Then you can achieve your goal. That was the summary of this lesson. You will read this chapter by yourself, and if you find any difficulty, you can ask me in the live session. Now, we'll move towards the grammar topic. Okay, what is that? The very first topic of your book is parts of speech. I know that you really don't want to discuss about the parts of speech. We all know that what is a noun, pronoun, adjective, verb, etc. Okay, but sometimes I have written, look, nap website. Why I have written this? कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमसे कोई कहता है कि मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, हम तो खुशी के मारे जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। आखिर में हमें ऐसा होता है एक नाम भूल जाता है और अपना हम टाइम वेस्ट कर रहे थे, कौन सा रह गया, कौन सा प्रपोजिशन तो हो गया था, ये तो हो गया था, फिर कौन सा रह गया। सो दैट इज अ वे टू लर्न दैट, टू मेमोराइज दिस नेप। Okay, so we'll move towards the first one. What is that? Noun. What is a noun? A noun is a word used as the name of a person, place, or a thing. We all know that. This is noun. Then tell me, what is a happiness? What is a pride? What is honesty? Is it a name of a person, place, or a thing? No, these are the not names of the things or person. So what are they? अगर हमें पता है नाउन होता क्या है, लेकिन जब हमें कोई बोलता है नाउन बताओ नाउन क्या है, तो हम नाउन के एग्जाम्पल सोचना शुरू कर देते हैं, बॉय, गर्ल और चेयर और कायदे आजम। हम जल्दी जल्दी कराची, हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं। इफ यू थिंक दैट नाउन इज नॉट ऑल दीज थिंग्स, वट इज नाउन? एनीथिंग अराउंड यू। दिस इज माई यू कैन से डेफिनेशन, ऐसी चीज जिससे कोई आपके पास जो जो चीजें हैं उन सबका कोई नाम है। तो नाउन होता क्या है? नाउन होता ही नेमिंग वर्ड है। किसी भी चीज का जो नाम है तो वो क्या है आपके पास? ऐसी चीज। लुक एट द प्रॉपर डेफिनेशन, द वर्ड थिंग इंक्लूड्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स that we can see, touch, hear, taste or smell, and it's something that we can think of but cannot perceive the senses. और कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं, जिसे हम स्मेल कर सकते हैं, और जैसे कि और जो भी ऐसी चीज़ के बारे में इवन हम सोच सकते हैं, वो भी आइडिया भी हो सकता है। तो सारी चीज़ें क्या होती है? नाउन। अब मेरे पास क्या है? नाउन। अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ, चेयर पे बैठी हूँ, लैपटॉप है मेरे पास, मेरे साथ मोबाइल पड़ा हुआ है, साथ में सर डेटा केबल पड़ी हुई है, तो ये सारी चीज़ें मेरे पास क्या है? नाउन है। मैं रूम में हूँ तो रूम खुद नाउन है, यहाँ पे मेरे पास फैन है, तो यहाँ पे मैं सूंघ रही हूँ, बारिश हो रही है तो खुशबू आ रही है मिट्टी की, तो ये भी क्या है? नाउन है। जो मेरे पास स्मेल आ रही है ये भी नाउन है। बर्ड से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, हियर जो भी म्यूजिक वगैरह जो भी आसपास से, तो वो क्या है? वो भी नाउन है। सो दीज ऑल द थिंग्स आर नाउन. If someone says that give me the examples of noun, you don't need to just think about the examples. All the things around you is a noun. For example, look at the examples: man, mountain, state, book. I have given the, you can say, the logical examples. So look at the next. These are the common nouns: man, mountain, state, book. Look at the proper noun. What are they? Qaid Azam is the man. That is a proper one. Mountain, Mount Everest, state Pakistan, the Noble Quran is a book. These are the specific things. Love, wealth, happiness, pride, honesty, fear, history. What are they? These are the abstract nouns. All the arts and the sciences are all known as the abstract noun. Okay. Bunch, audience, crowd, family, theme, flock. What are they? These are also nouns. These are collective nouns. We will discuss the later kinds. I'll discuss the kinds of nouns in the later lecture. Now we will move toward the adjective. What is adjective? Adjective is a word that describes a noun. It can tell us appearance, age, size, weight, shape, color, condition, feeling, and the quality of a noun or a pronoun. Okay, it describes a noun. So it may tell you the appearance, age, size, weight, shape, color, condition, feeling, and the quality. Look at the examples.
young, long, little, shorter, desperate, happy, dark, light, aggressive, agreeable, ambitious, brave. These are the examples of adjective. Like desperate and happy, these are the feeling. Maybe he is happy, this is a condition, and he is desperate. These are the feelings or condition of the person. Dark, light, these are the colors. Now we'll move to the third one. What is that? Pronoun. A word used inside of a noun. कोई भी वर्ड जो हम नाउन की जगह यूज करते हैं वो क्या होता है? हमारे पास प्रोनाउन होता है. लाइक ही, शी, इट, दे, हर, हिम, यू. ये जो सारे हमारे पास आ जाते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं. अब इसमें आ जाते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है. हम उन्हें डिस्कस करेंगे जब हमारा पूरा लेक्चर होगा प्रोनाउन पे. Look, what is a verb? That is from the Latin word verbum. Verbum means word. Verbum का मतलब होता है word. अब तो इसका मतलब a word, क्योंकि ये सबसे important word होता है कि इसमें सेंटेंस के अंदर सबसे important word क्या होता है? Word ही होता है. उसके बगैर तो सेंटेंस हमारा मीनिंगलेस ही लगता है, कोई कंप्लीट उसकी फॉर्म बनती नहीं है. Look, a word used to describe an action, state or occurrence and forming the main part of the predicate of the sentence. ये क्या होता है? प्रेडिकेट का मेन पार्ट क्या होता है? हमारे पास वर्ब ही होता है. एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है. तो हमारे पास इसकी एग्जांपल्स, वैसे अगर हम कॉमन एग्जांपल्स देखें तो वो भी आ सकता है. ईट, ईट, रन, गो, बहुत कुछ आ जाता है. ठीक है, हमारे पास ड्रिंक सारी आ जाती है हमारे पास सिंपल सी इसकी एग्जांपल्स. लेकिन कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसकी जो दूसरी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं वो कौन सी हैं? एक्सप्लेन, एनालाइज, लिसन, ऑब्जर्व, गो. Now you will use these examples in the sentences and just observe these and then tell me in the live section. There are the three types of the verbs. Action verbs, which can be transitive or intransitive. Modal verbs, sometimes called the helping verbs, and the auxiliary verbs, sometimes called the linking verbs. We will discuss it later in the next lecture. Now we'll move towards the last slide, that is adverb. A word or phrase that modifies or qualifies an adjective, verb or the other adverb or a word group expressing a relation of place, time, circumstances, manner, cause or degree. ये सारे हम देखें तो ये कौन सी बन जाती हैं? इसकी काइंड्स बन जाती हैं. प्लेस, टाइम, सर्कमस्टांस, मैनर, कॉज और डिग्री. ये एडवर्ब की आगे से हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ काइंड्स. अब एडवर्ब होता क्या है? वो वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है, वर्ब को डिस्क्राइब करता है. एडवर्ब है ना, ऐड करता है मीनिंग वर्ब में. या फिर वो दूसरा कोई एडवर्ब है तो उसको डिस्क्राइब करेगा, या कोई एडजेक्टिव है तो ये एडजेक्टिव के अंदर भी उसे भी मॉडिफाई कर सकता है. अब इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? देयर आर द एडवर्ब ऑफ द डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड वर्ब ऑफ टाइम. लुक एट द एग्जांपल्स. शी ऑलवेज arrives early. Here when she arrives, that is, you can say it's a time of adverb of when she arrives. Time भी हो सकता है इसकी. she always arrives early. This is the example of the time. How he drives carefully. So that is the manner. Where they go everywhere together. Where they go, that is adverb of place. In what way? She eats slowly. To what extent? It is terribly hot. So this was the lecture about the parts of speech. Later part of speech we will discuss in the second part of the lecture. Thank you so much.